Hi guys, welcome to Origis Computer Classes once again. I hope you guys are doing well, right? तो अभी तक आपने मेरा बहुत सारे लेक्चर्स देख चुके हैं, राइट? सो नाउ आई हैव सम क्वेश्चंस टू यू. सी, यूजर्स से डेटा लेके कैसे स्टोर करना चाहिए, हाउ वी स्टोर देम, ये सब हम सीख चुके हैं, राइट? वी कैन यूज वेरिएबल्स, वी कैन यूज एरेज, राइट? लेकिन देयर इज आई एम आस्किंग अ प्रॉब्लम. ओके, देयर इज अ प्रॉब्लम. से मान लीजिए एक एयरपोर्ट. ओके, इन एयरपोर्ट देयर एवरी डे देयर आर मेनी पैसेंजर्स हु आर विजिटिंग, राइट? तो मेरा जो एकदम बेसिक प्रॉब्लम है, ठीक है, मेरा जो रिक्वायरमेंट है दैट आई हैव टू स्टोर, आई हैव टू क्रिएट सच अ डेटा स्ट्रक्चर सो दैट कि जितना भी मेरा पैसेंजर्स आए, ओके, विजिटर्स, उन सब का इंफॉर्मेशन मेरे पास स्टोर्ड होना चाहिए, राइट? तो बहुत ही बेसिक सा प्रॉब्लम है. लेकिन देखिए, द प्रॉब्लम इज कि मुझे हर एक पैसेंजर का, एक दिन में जितना भी पैसेंजर आ रहा है, उनका इंफॉर्मेशन मुझे स्टोर करके रखना है, राइट? तो कैसे करेंगे? आप लोग सोच रहे होंगे कि वी शुड यूज एरेज, राइट? तो ओके, तो अभी अगर मैं एक चीज बोलूं कि देखिए, एरेज में साइज शुड बी फिक्स्ड, राइट? इन एरेज द साइज शुड बी प्री डिफाइंड. कंपाइल टाइम में हम लोग को साइज दे देना पड़ता है, ये सुन लो. व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ एरे इन सी? तो सी का अगर मैं बात करूं, सो एरे इट्स इंट ए ऑफ, राइट? इधर मुझे एन, एंड एन कैन बी एनी यूजर गिवन वैल्यू. ये फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जस्ट डायरेक्टली राइट इंट ए ऑफ 1000. मगर फ्रेंड्स, द प्रॉब्लम इज, आपको कैसे पता कि दिन में 1000 पैसेंजर्स ही आने वाले हैं, राइट? अच्छा, ये अगर आप लोग बोलोगे कि ये चीज़ हम यूज़र पे छोड़ देते हैं बीइंग अ प्रोग्रामर, तो अच्छा, तो ये फ्लाइट का जो मैनेजर है उसको भी कैसे पता चलेगा कि दिन में, जैसे जो भी डे है पर्टिकुलर, उस पर्टिकुलर डे में उसको भी कैसे मालूम चलेगा कि कितना रात तक कितना पैसेंजर्स आएगा, राइट? ये क्या मालूम होना पॉसिबल है? कोई तो फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, एस्ट्रोलॉजर तो बैठा नहीं है इधर, राइट? तो ये एन किसी को भी पता नहीं चल सकता. तो फिर मुझे चाहिए कि हर एक पैसेंजर का इंफॉर्मेशन स्टोर हो, ये सुन लो. तो फिर ये चीज़ कैसे करेंगे? सो देयर अ कॉन्सेप्ट कम्स डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन. तो अभी तक हम लोगों ने जो भी किया दैट वाज स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, राइट? अभी तक जो भी हम लोगों ने किया, दिस वाज स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन. व्हाई स्टैटिक? अच्छा, स्टैटिक एंड डायनेमिक, दिस थिंग्स वी हैव हर्ड ना इन फिजिक्स. तो क्या स्टैटिक का मतलब क्या होता है और डायनेमिक का मतलब क्या होता है? तो स्टैटिक मतलब समथिंग इन रेस्ट, राइट? मतलब समथिंग दैट कैन नॉट मूव, एंड डायनेमिक मीन्स समथिंग दैट कैन मूव. तो अगर मैं और भी डिटेल में बोलूँ, तो स्टैटिक मीन्स जिसमें कोई एक्शन ना हो, एंड डायनेमिक मीन्स रन टाइम में जिसके पास एक्शन हो रहा हो. चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं. ये तो एक एग्जाम्पल हो गया. तो दिस एरे काइंड ऑफ थिंग्स, या फिर मैं वेरिएबल का भी बात करूँ, अगर से इंट ए इज इक्वल टू 10, अगर मैं लिख रहा हूँ, इफ आई एम राइटिंग इंट ए इज इक्वल टू 10, तो ए में इट इज स्टोरिंग 10. ओके, यू कैन स्टोर एनी नंबर ऑफ वैल्यूज, राइट? तो फिर ये हो सकता है. तो सी, आई कैन नॉट चेंज द वैल्यू एट रन टाइम. मतलब जब प्रोग्राम आपका रन कर रहा है, यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू ड्यूरिंग रन टाइम. ये सुन लो, आप जरा सोच के बोलिए, क्या एड्रेस के केस में हम साइज का वैल्यू ड्यूरिंग रन टाइम चेंज कर सकते हैं? नहीं ना, राइट? तो वी कैन नॉट डू दैट. सो ये है, वी कैन कॉल देम एज स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन.
जो एक बार आपने कर दिया तो फिर ये फिक्स्ड हो गया, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। एक बार मेमोरी आपने एलोकेट कर दिया, आप उसको वापस से चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको करना भी है चेंज तो इट विल गिव यू, अगर से आप बोलोगे कि देखिए एक नया एरे बना रहे थे, एक तो आपको पता नहीं चलेगा कि कितना पैसेंजर्स आएगा, तो आप फिर से एक नया, आप तो जो जो इंसान जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे उसको तो प्रोग्रामिंग नहीं आता होगा ना, ऑफ कोर्स वो तो यूज़र है, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि उसको प्रोग्रामिंग का नॉलेज हो। इवन इफ देयर इज सम प्रोग्रामर जो बिहाइंड द सीन काम करेगा इसके पीछे, तो आप लोग सजेस्ट करोगे कि ओके तो फिर जितना पैसेंजर आएगा एक बार हो जाएगा, तो फिर एक नया एरे क्रिएट कर देते हैं, राइट। इंट बी ऑफ फिर जो भी न्यू साइज होगा, ये सुन नो। अच्छा, तो इसमें भी एक हैक है। से सपोज फर्स्ट ऑफ व्हेन द फर्स्ट वैल्यू इन ए वाज 10, या फिर सॉरी दिस इज ए, ओके। एक तो आप ये चीज़ कर नहीं सकती, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है। दो बार आप एक ही लाइन में ये चीज़ और ये चीज़ दोबारा नहीं कर सकते, सिंटेक्स है। फिर भी इफ़ बाय सम मेथड आप दूसरा किसी A2 क्रिएट करते हैं, A2, तो A2 आई एम राइटिंग इट एज A2। इफ से A was 10, size was 10 and new A is 20, this will give you, see ये 10 साइज का एरे था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 10, ओके, 0 to 9। तो इसमें कुछ कुछ डेटाज आपका स्टोर हुआ था, ओके, सम डेटाज यू हैव स्टोर्ड, ओके, एंड सो ऑन। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू डू these things, if you don't want to use, see it will stay as it is in the memory. It will create a fresh new it will allocate a fresh new cells, 20 cells array, okay, from 0 to 19। और ये सारा डेटा आपका लाइक गार्बेज होगा, बिकॉज ये सब तो आप यूज़ नहीं करोगे वापस से। ये सुनो, आइदर आपको करना पड़ेगा कि प्रीवियस एरे से फिर से कॉपी करना पड़ेगा, ये फिर ये स्टोर करके रखना पड़ेगा, दैट इज़ अ मेमोरी वेस्टेज अलग से, क्योंकि आप बाद में तो इसको अलग से यूज़ नहीं करोगे, इसी एरे को यूज़ करोगे। मेमोरी वेस्टेज बिकॉज 20 इंटू, अगर इंटीजर का आपको 20 इंटू 480 प्लस 40 120 बाइट्स, इसमें से 40 बाइट्स तो आपका वेस्टेज है, राइट। सो दिस इज नॉट अ कन्वीनियंट वे। चलो, नाउ therefore a concept comes in C that is called dynamic memory allocation. Repeat the name, dynamic memory allocation. Dynamic का मतलब क्या होता है? The thing which we can change, जिसमें एक change आता है, right? If there is a change, physics में ऐसा पता है ना, there is a change in displacement, तो here there will be a change in size allocation, okay। So dynamic memory, आपको नाम से ही मालूम चल गया होगा, dynamic memory allocation in a dynamic way, right। तो देखिए, एक हम लोगों का सिस्टम में सी ऐसा कोई मतलब आर्किटेक्चर का, अगर मैं कंप्यूटर का बात करूँ तो इन रियलिटी ये सब नहीं होता है। फॉर आवर कन्वीनियंस हम लोग दो टाइप का मेमोरी मानते हैं कंप्यूटर में। वन इज स्टैक, ठीक है, स्टैक मेमोरी, ओके। वन इज आपका हीप मेमोरी, ओके, हीप मेमोरी। आप जैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, एक्चुअली ये लॉन्ग स्ट्रिप ही होगा, हीप मेमोरी भी, दैट इज ये हम लोग का इमेजिनेशन है, ओके। हम लोग जस्ट इसको इमेजिन कर लेते हैं कि एक स्टैक है, ये एक हीप है। एक्चुअली द मेमोरी इज अ लॉन्ग, अगर हार्डवेयर का हम बात करें तो इट्स लॉन्ग स्ट्रिप प्राइमरी मेमोरी, ओके। चलिए,
तो एक्चुअली में देखिए व्हाट हैपेंस, हम लोग जो भी प्रोग्राम आज तक करते आए हैं वो स्टैक में ही होता था, राइट। बेसिक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर अगर देखें तो पहले मेन रन होता था, राइट। फर्स्ट मेन फंक्शन एग्जीक्यूट्स, देन इधर in C there is a section called global where we have initialized section, variables which are initialized and uninitialized is stored, okay, right, okay. So इसके बाद actually wait see इधर we have the stack. एक तो आपका ओरिजिनल मेमोरी में दिस इज अ स्टैक, ये एक स्टैक है, एंड इस स्टैक का काम होता है टू एग्जीक्यूट योर लाइंस, ओके, एग्जीक्यूट द लाइंस इन योर प्रोग्राम, जो भी आप लिखते हैं लाइन बाय लाइन मेन, फिर उसके अंदर जो भी आप कोड लिख रहे हैं, ओके, द कोड विच यू आर राइटिंग, ओके, एंड देयर इज समवेयर हियर हीप, ओके। तो हीप को हम अगर जूम इन करेंगे से दिस इज अवर हीप मेमोरी। तो इतना तक का पोर्शन, द पोर्शन टिल स्टैक मेमोरी वी हैव यूज्ड अर्ली आल्सो, बिकॉज हम लोग जो भी प्रोग्राम व्हाट एवर वी हैव रिटन, पहले मेन फंक्शन से स्टार्ट हो रहा है, फिर जो वेरिएबल्स वी आर इनिशियलाइजिंग और नॉट इनिशियलाइज्ड, इट इज गेटिंग स्टोर्ड हियर, देन इन द स्टैक one by one line calls happen, then from the top of the stack एक line execute करके that gets destroyed, right, from the memory. Now if I talk dynamic memory allocation, this will use this heap section, okay, this will use this heap section, fine. Now how does it work? तो इसको मैं अभी के लिए छोड़ता हूँ, मान लीजिए से दिस इज अ हीप मेमोरी. नाउ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हैज there are mainly 4 functions in dynamic memory allocation we use. One is malloc, second one is calloc, third one is realloc. Actually because of this realloc function only, dynamic memory allocation is like dynamic memory allocation. Means what is our expectation? What is our expectation from dynamic memory allocation? If once we have initialized a size, we should also be able to reinitialize a size. ये जो reinitialization का काम है, this is mainly done by this realloc. Okay, we will see it how what happens how. Okay, and so next is free. तो फर्स्ट 2 फंक्शन का काम होता है टू एलोकेट, ओके, to allocate the memory, okay, right. Now in दोनों भाई सबको in malloc and calloc does it know how to reallocate, how to reinitialize a size. ये दोनों सिर्फ allocate ही कर सकते हैं, just like array, okay, but काम जो होगा that thing will be reinitialization thing will be done by realloc. और ये free का क्या काम है, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, to if we want to free someone from the allocation, right, free a memory that is already allocated using malloc or calloc, right. Okay, चल तो देखते इन functions को, let us discuss these functions one by one. Okay, so now starting from malloc. Now what does malloc step? Malloc इसका फुल फॉर्म है memory allocation. So नाम से हमको पता चल रहा है कि इट विल एलोकेट अ मेमोरी. नाउ हाउ इट इज गोइंग टू एलोकेट? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए फंक्शन, इट्स अ फंक्शन malloc. What it is going to do, first of all,
it is going to allocate a memory. That means अब देखिए सिस्टम को, how would system know a memory has been allocated? कैसे पता चलेगा सिस्टम को if a memory is getting allocated? Pause the video and think for a while. Okay, did you try? So what can we do? It can return a pointer, right? It can return a pointer of the memory address it is allocating. So if it is returning a pointer, to that memory address, so this is ptr. We can take a pointer variable, okay, right? Any pointer variable you can take. So the syntax of writing malloc is, see, फंक्शन से पहले वी हैव द डेटा टाइप. अगर मैं किसी भी फंक्शन को लिखता हूँ, से सम, एक फंक्शन इफ आई एम डिफाइनिंग सम इंट ए कॉमा इंट बी, तो इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होता है? फंक्शन नेम से पहले येस और नो. येस और नो. आपने अगर फंक्शन इन सी मेरा वीडियो देख चुके तो आपको पता चलेगा कि रिटर्न टाइप जो होता है इधर लिखा होता है से इंट आई वांट टू रिटर्न, तो इंट इज द रिटर्न टाइप ऑफ दिस फंक्शन. येस और नो. तो फिर मैलोक के केस में क्या होगा? इसका रिटर्न टाइप इज अ पॉइंटर, राइट? सो सेम वे में इट शुड ऑल्सो हैव द रिटर्न टाइप बिफोर द फंक्शन नेम रिटर्न. तो इफ दिस इज मैलोक, द फंक्शन नेम इज मैलोक, here there will be the return type. अब return type is a pointer. अच्छा, pointer if we, in C pointers if we talk about, see there can be a void pointer also. Okay, तो but आप लोगों को मैं, because you are learning this for the first time, void pointer से आपको confuse नहीं करना चाहता हूँ. See, pointers का भी तो एक data type होता है, yes or no? तो उस डेटा टाइप को वी नीड टू मेंशन. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज गोइंग टू रिटर्न अ पॉइंटर, तो दैट इज वाई दिस स्टार मार्क. पॉइंटर्स के लिए स्टार मार्क होता है, राइट? एंड द डेटा टाइप, नेम ऑफ द डेटा टाइप. सो डेटा टाइप का नाम आपको इधर लिखना है. देन दिस पॉइंटर सेम टू से कि मैलोक इज रिटर्निंग अ पॉइंटर. ऑफ कोर्स ये डेटा टाइप ऐसे विल बी एज पर योर रिक्वायरमेंट, ओके? And here the number of bytes we want to store, okay? It will be the argument, the number of bytes we are going to allocate in the memory. मेमोरी में हम कितना बाइट्स लेने वाले हैं, ओके? मेमोरी में जो भी न्यू मेमोरी फॉर्म होगा तो दैट इज गोइंग टू टेक हाउ मेनी बाइट्स, ओके? तो दिस विल बी द नंबर ऑफ बाइट्स. तो हम क्या करते हैं बेसिकली, सी, हम लोग तो डायरेक्टली ऐसे साइज नहीं बोल सकते ना, बिकॉज सी इंटीजर टाइप का मैं किसी भी डेटा टाइप, अगर प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात करूँ तो इंटीजर का साइज इज 4 बाइट्स इन 64 बिट कंपाइलर एंड 32 आई मीन 64 bit 4 bytes and 2 bytes in 32 bit compiler. Yes or no? So if that is so, तो क्या हम, see, we can write actually, that is not a syntax error, we can write here 40, that means 40 bytes, okay? We can write here 20, that means 20 bytes. ठीक है, चलिए यही लिख के देखते हैं कि कैसे होगा ये चीज़. तो ये here we pass the number of bytes, okay? Okay, हम लोग एक करके ही देखते हैं प्रोग्राम कैसे allocate होता है. Say suppose I want to store what to say 20 बाइट का एक साइज में एक मेमोरी क्रिएट करना चाहता हूँ, where I want to store name of, या फिर सॉरी रोल नंबर ऑफ 5 स्टूडेंट्स, ओके? तो कैसे डिक्लेयर करूँगा मैं? सी, first of all, see, malloc can allocate a new memory, okay? Malloc can allocate a new memory like this, okay? And see,
we want to store integer type. Okay, जो भी हम roll number store करेंगे that is of integer type. So this function, अब देखिए ये जो भी डेटा टाइप है बाय डिफॉल्ट इट रिटर्न्स अ void pointer. ठीक है, what we do, we typecast it into our requirement data type. It will return a pointer, that is for sure. malloc is going to return a pointer, and you need to write here this int, because we need integer pointer. ठीक है ना, मुझे इंटीजर टाइप का एक मेमोरी चाहिए दैट इज ऑफ 20 बाइट्स. फाइन, एक 20 बाइट्स का मुझे मेमोरी चाहिए ऑफ 20 बाइट्स, right? And here int star ptr is equal to, right? एक तो मैं ठीक से लिखता हूँ, int star ptr is equal to this malloc function. अच्छा, now how is it going to allocate this 20 bytes? एक तो आप डायरेक्टली इधर लिख सकते हो ना 20, this will do the work. लेकिन देखिए, you don't know ना what is the requirement of the user. You do not know what is the requirement of the user. तो हम क्या कर सकते हैं, see, there is a function in C to return, we are very sure that the type is going to be of integer type. तो size of int, ठीक है, size of int, this is of 4 bytes, and इसको हम मल्टीप्लाई करते थे. we will just ask user कि कितने, how many entries you are going to store. तो यूजर ने बोला 5 roll number of 5 students, we multiply that by 5, right? तो इधर से सपोज हम n मान लेते बिकॉज यूजर इज गोइंग टू गिव द वैल्यू, तो n इज इक्वल टू 5, n सपोज से यूजर इज गिविंग. फाइन, तो n इंटू साइज ऑफ इंट, n इज से 5, तो 5 इंटू साइज ऑफ इंट कितना, दिस इज 4, तो 5 इंटू 4, दिस विल एलोकेट दिस 20 बाइट्स. ठीक, अब इसमें देखिए देयर विल बी अ बेस एड्रेस 1000. ओके, in 20 bytes में से there will be addresses stored like this 1000. okay, फिर from 1000 to 2003 there will be a section, but in case of malloc this division partition is hidden, actually hidden. For your convenience you can do the partition from 1000 to 2003, then 1004 to 2007. okay, then again starting from 1008. yes or no? तो ऐसे करके up to 20 bytes. ये partition, now we are coming to how it is created. Actually this malloc function is allocating memory from the heap section. ठीक है, and heap में you know that things are not organized, unordered. so इसमें से from heap memory it is taking a fresh new section of 20 bytes, merging blocks and to form this fresh new 20 byte memory. okay, giving us, allocating us a fresh new 20 bytes memory, and which is having no partition, but see still we can store data. And moreover, if we are allocating memory using malloc, by default it is having garbage values. In each section we will be having garbage values, right? And since it is a data of pointer data type, what we can do, we can just store ptr, we can just store the data using the pointer, just like we can do in array also. How can we access the memory using pointer? Let us do a program and see within this 20 bytes how can we store this, store the values. first of all एक बार allocation फिर से clear करें. so this is the function name, this will be the return type of the data, number of bytes you want to allocate, and the variable where you are storing. This variable is storing the base address of this newly allocated memory.
So the PTR is pointing in this 1000 PTR in the first block of the memory, in the first block of this newly allocated memory, right? So let us see a program. How is it going to work? See, say suppose we want to store roll numbers of 5 students. Okay, roll numbers of 5 students. So first of all, you will give the header files and all those that things. I am directly starting from the main function. Say int main. Okay, opening brace. Now see, up from user we can ask int in, right? And we can ask user printf enter number of entries slash scanf mod b format specifier for integer and in, right? Acha, one package you need to declare hash input stdlib.h and stdio.h. Okay, this you need to declare. stdio.h you should declare before this. Okay, now we need a pointer type. We want to allocate memory, so now we are not using array, we have to use malloc, using dynamic memory allocation, no? So using malloc, how to allocate it? So first of all write malloc n into, each block will be having 4 bytes, no? Because see, entries will be of integer data type. Yes or no? This is for sure roll number. So size of int. Okay, एक चीज अभी के ट्रिक याद रख लेना. सी, जो भी डेटा टाइप इधर रिटर्न टाइप में लिखने वाला उसका ही साइज ऑफ आप इधर लिखोगे. ओके, whatever you are going to return here, size of will be that data type only. So size of int is here. So what will be the return type here? Why integer only, right? So integer, and integer what? Self integer? No, it's a pointer. Integer pointer. Okay, and int ptr, int star ptr. Okay, I'm declaring it here. Okay, so ptr is equal to this whole thing. Now how to store data in that memory. So we have already created this memory of 20 bytes. Okay, 1000 up to say 1000 फिर 1004. First partition is from 1004, second is 1008, third one is somewhere here 1012. Okay, 1000, yeah, 1 2 3 4 5 things done. Okay, 1 2 3 4, fourth partition is from here, say 1016, 1016, yeah, and that's all. So 5 partitions we have done. See, these partitions are imaginary. In malloc, these partitions are not actually happening. It is giving you a whole new allocation. Okay, there is no partition in malloc. ये चीज़ याद रखना दिमाग में, ठीक है? And because see, we are multiplying here the size of int, and this thing will allocate actually a new memory full of blank space. There is no partition. As because we are using the pointer, we can store it in this way. What can we use? For loop. So for
int I is equal to 0, I less than n, I plus plus, because we are going to store 5 entries from 0 to 4. Opening brace. So scanf mod d comma ptr plus I. Closing of for loop, closing of, before that write return 0, closing of main. Now you maybe have one question, why didn't we use ampersand here? First let us see the working, फिर आपको समझ में आएगा कि why didn't I use this ampersand symbol. इधर तो मैंने यूज किया, why didn't I use it here? ये ptr, first of all what is the value of I? 0. So ptr is initially pointing at 1000. First block, yes or no? ptr is initially pointing at 1000. So if ptr is pointing at 1000, so 1000 plus 0. And now see 1000 plus 0 is 1000. This 1000 is what? A memory address? Yes or no? It's already a memory address. See, ampersand, why do we write? Ampersand means what? Address of n. Here we are writing basically, see, if this is n and n is having some address of 500, so we are actually saying address of n, at address of n stored the value of n. So here why do we need to write ampersand? Already it's a memory address. So ptr plus I, it's ptr plus 1000 plus 0. At 1000 plus 0 stores, say I am storing 5. Okay. Now I changes to 1. I updates to 1. If it is 1000 plus 1, not 1001. 1000 plus 1 is not 1001. In case of pointers, what we know? 1000 plus 1, if we are doing in case of pointers का वीडियो आप देख चुके हो शायद. In case of pointers, if we do 1000 plus 1, what we do? 1000 into 1, 1000 plus 1 means 1000 plus 1 into size of the data type, and in this case what is the data type? Int. So 1000 plus 1 into 4, so that is 1004. So at 1004 store 10, say 10 I have stored. I changes to 2. 1000 plus 2. 1000 plus 2 means what? 1000 plus 2 into 4. So 1008. At 1008 store say 15. Okay. This is out at 1000. See, at 1008, and I updates to 3. 3000. PTR value is 1000. 1000 plus 3 means what? 1000 plus 3 into 4. 1012. At 1012, say user has given 20. I updates to 4. At PTR is 1000. 1000 plus 4. 1000 plus 4 means what? 1000 plus 4 into size of data type, that is 1016. At 1016, say you have stored 25. See, actually this is from 1000 to 1003, 4 bytes. 4 bytes करके है ना एक block इधर, because it is a integer pointer, storing integer types only. So this is how we can store the values, right, using malloc. ठीक है. calloc में भी there is nothing different. calloc का syntax में, see, I am not writing it again. calloc function, अगर आप malloc अच्छे से समझ गए तो calloc कैसे होगा? सी calloc के केस में calloc believes in partition. ठीक है. calloc का मैं प्रोग्राम नहीं शो कर रहा हूँ. सी आई एम जस्ट शोइंग यू द syntax of calloc. Say I am storing same roll number of 5 students using calloc. Okay. So I am raising this. Hope you have copied it. Okay. If not, just come back to this time interval and take a screenshot. Okay. So if I am writing the syntax of calloc, so heading is calloc. Okay. See, I am doing the same operation using calloc. Okay.
calloc stands for what? Calloc stands for contiguous allocation. Contiguous allocation. What do you mean by contiguous? Contiguous का मतलब क्या होता है? Continuous से it is something nearest to continuous. Array में भी we have used, right? In arrays we have used ना the contiguous memory allocation. तो it will also do the same thing for us. Just malloc में क्या होता था? Partition नहीं होता था. तो it will store. See, calloc is this function. Okay, we will pass the arguments n, and now instead of writing asterisk, we will write comma n comma size of function in C and int. एक्चुअली जो भी आप डेटा टाइप यूज करेंगे, इफ इट इज इंट, इफ डबल, आई मीन इफ फ्लोट देन फ्लोट. ओके, तो सी दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन malloc एंड calloc. Calloc टेक्स 2 arguments as input, okay, and malloc takes 1 argument as input. See, that was n into size of int. This is n comma size of int, right? So 2 parameters are given as argument. Okay, so now, so this is size of, okay, and of course अब बाकी सारा चीज सेम है, same as malloc. So what will be the return type? It will also return a pointer, क्योंकि ये dynamic memory allocation का part है. From heap it will allocate a memory. It will return a pointer of integer type, int star. Okay, and it is definitely going to store in a variable int star ptr is equal to. सेम, एकदम सिंटैक्स सेम है ना, कोई प्रॉब्लम है? होना नहीं चाहिए अगर आप malloc अच्छे से समझे हो. ठीक है, अगर malloc अच्छे से नहीं समझे, प्रीवियस एक बार बैक करके फिर से एक बार देख लो. ठीक है, फर्स्ट टाइम अगर जो आप सीख रहे हो तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है. ठीक है, बट राइट, take some problems and try to attempt it regarding dynamic memory allocation. Basic problems हो जाएगा प्रैक्टिस, हम डिस्कस भी करेंगे अपकमिंग वीडियोस में. ओके, तो फिर से सपोज आई एम टेकिंग द सेम एग्जांपल, और ये 20 बाइट्स इट हैज स्टोर्ड, 20 बाइट्स इट हैज स्टोर्ड. नाउ इसमें देयर विल बी पार्टीशन 1 2 3 4 1 2 3 4 5. ओके, बस इसमें इंडेक्सेस नहीं होगा क्योंकि ये एरे नहीं है. ओके, बिकॉज इट इज नॉट एरे. से मोर 1000 1004, these are the addresses of these blocks, 1008 1012 1016, and ptr is pointing here. now पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि दिस इज एक्सेप्टिंग 2 पैरामीटर्स एज आर्गुमेंट. सेकेंड डिफरेंस इज malloc का जो होता है, malloc में जो आप ब्लॉक देखे होंगे, इफ वी एलोकेट अ ब्लॉक यूजिंग malloc, एज आई सेड, इन सब में गार्बेज वैल्यूज होता है. दीज आर हैविंग गार्बेज वैल्यूज, एक बड़ा सा गार्बेज वैल्यूज होता है, राइट? बट इन केस ऑफ calloc, contiguous allocation, these blocks are initialized by the default value of the data type. Okay, डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द डेटा टाइप. अच्छा, अभी देखिए डिफॉल्ट वैल्यू आप लोगों को ऐसे में बोलूंगा नहीं कि इंटीजर का 0 होता है, फ्लोट का 0.0 होता है. सी, इफ देयर इज नो ऑपरेशन बीइंग डन ऑन अ कंप्यूटर, ऑन अ सिस्टम, राइट, दैट मीन्स वी आर आइडल. अच्छा, आइडल केस में देयर इज नो हाई वोल्टेज. अच्छा, दैट मीन्स देयर इज लो वोल्टेज, मतलब वोल्टेज का मैं बात कर रहा हूँ. इफ देयर इज नो ऑपरेशन, नो सिग्नल्स आर गेटिंग पास्ड, राइट? सो इफ नो सिग्नल मीन्स दैट इज 0. येस और नो, येस और नो. इफ नो सिग्नल मीन्स वी कैन से दैट इज 0. तो अगर मैं इंटीजर का बात कर रहा हूँ तो इंटीजर स्टोर्स इंटीजर अ होल नंबर. तो व्हाट विल बी द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर इफ इट इज आइडल, मतलब इसमें कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है. तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर इज 0 0 0 0. it will be initialized with 0 everywhere. if I talk about, अगर आप float यूज करते
then it would have been initialized with 0.0, 0.0, 0.0 and like so on. Yes or no? अगर कैरेक्टर यूज करते तो कैरेक्टर का आइडल कुछ भी नहीं होता, तो सिर्फ सिंगल कोट, 2 सिंगल कोट्स, नथिंग एल्स. ठीक है. सो ये सब याद करने का चीज नहीं, देयर इज अ लॉजिक. ठीक है, देयर इज ऑलवेज अ लॉजिक इन कंप्यूटर साइंस. ठीक है. तो पीटीआर ओके, ये 1000 हो गया. एंड नाउ वो सेम यू कैन यूज दैट फॉर लूप हियर ऑल्सो. फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस एंड ओपनिंग ब्रेस. होप आपको फिर से लिखने का जरूरत नहीं है, बिकॉज पूरा थिंग यू कैन जस्ट स्कैन हियर अगेन फ्रॉम स्कैन एफ mod d कॉमा एम्परसेंट यूज करूंगा. क्या should I use ampersand symbol? Yes or no? Yeah, you are right. So we should not use. So just ptr plus I, ptr plus I. Okay, and yeah, that's all. अब ऐसे, अब now whatever value user will give, say 5, this will be replaced by 5, 10, okay, 15. Actually this will be overwritten, तो ये 5 हो जाएगा, फिर ये 10 हो जाएगा, 15, और जो भी whatever user is going to give. Right? लेकिन सी स्टिल यू मे बी हैविंग अ क्वेश्चन, इससे तो अच्छा एरे ही था, इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज क्यों करे? बिकॉज सी अभी तक तो हमने कोई रीइनिशियलाइजेशन नहीं किया ना, बिकॉज यूजर अगर कोई न्यू वैल्यू इनपुट करना चाहे आफ्टर दिस 5 एंट्रीज, तो 6th वाला एंट्री करने के लिए व्हाट टू डू, राइट? ये तो एरे जैसे ही बन गया ना एक. ये सुनो, एरे में तो सेम प्रॉब्लम था, इधर भी सेम प्रॉब्लम है, तो फिर सॉल्यूशन क्या होना? सो वेट फॉर दैट सॉल्यूशन टिल नेक्स्ट वीडियो. ठीक है, वी विल बी सीइंग दैट फॉर दैट वी हैव द रीअलोक फंक्शन. कैसे इन दिस सेम मेमोरी हाउ वी कैन initialize with a new size without deleting these previous values. ठीक है, how can we overcome that problem of array? Okay, for that we have reallocate. And for that, wait till the next video. Till then, bye bye. Thank you guys.